अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ। मैंने आप लोगों से पास्ता की रेसिपी शेयर की है, तो आप भी मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से पास्ता बना के खाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो चीज़ें हम पास्ता बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे हम एक सॉस रेडी करेंगे जिसमें हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी, फिर मैं बारबेक्यू सॉस ऐड करूँगी और देन मैं केचप ऐड करूँगी। इसमें आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ है तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। चिकन मैरिनेट करने के बाद हम वाइट सॉस रेडी कर लेंगे।
होप कि आपको मेरी रेसिपी के सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम पास्ता को 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो ये रहा जी हमारा मज़ेदार सा पास्ता। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके स्टेप्स बहुत ही इजी हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। खुश रहें आप सब और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।